Very good evening. Today we are going to start with our next unit of accounting for managerial decision. Today we are going to discuss about the ratios. Now, what is ratio? Ratio is nothing but a numerical expression, the relationship between various accounting terms so that we can analyze the financial performance with respect to your accounting tools, your different parameters, that is profitability, your solvency, that is long-term and short-term, turnover of the company. So this ratios facilitate students both inter and intra-firm comparison. विदिन कंपनी भी कंपैरिजन कर सकते हो, एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि स्टेक होल्डर्स को किस तरह से प्रॉपरली डिसीजंस लेना है. ओके, सो इन शॉर्ट यू कैन से दैट रेशियो एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, the tool which is based on your accounting data. It helps the organization to take proper, appropriate decisions. It helps you to identify the strength, the weakness of the company, make informed decisions. Okay. Students, if you all start chatting all this happy Diwali and all this, I'll stop the chat. I think then we should stop the session and do happy Diwali to each other. There is no need to do the sessions then. Why every time I need to scold you all every day, every week? Are you all small kids? Don't you all understand? Or do you all want me to highlight your names? Yatendra Kumar, if you have any doubts, you can post it in the chat box. This is your unit 4. Every time I have to come and start like scolding you like you're small kids. So, ratio analysis definition, which is given by one of the experts, that is J. Batty. What does it state? It states, students, that the term accounting ratio is used to describe significant relationship which exists between figures that is shown in the balance sheet, in the profit and loss account, in the budgetary control system, or in any other parts of the accounting organization. That means the accounting ratios help you to understand what is the relationship between two figures in the organization. What are the decisions that you can take on the basis of the analysis that you did? Okay, that is all about your ratio analysis. Now, what are the different types of ratio analysis, or you can say the ratio expressions that we do? The first is your simple ratio. Now, simple ratio, ये हमने सबने हमारी डे टू डे लाइफ में यूज किया हुआ है. Simple ratio is that where you multiply when you divide one proportion with the another number. That is a simple division that you do. Let's take an example. 1 lakh rupees is the debt of the company and the equity is 4 lakh rupees. So the ratio would be 1:4. You divide one number by the another.
Second is your percentage. परसेंटेज वी ऑल नो, जैसे कि आपको 50 में से 30 मार्क्स आए, यू मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड यू गेट द परसेंटेज. सेम थिंग ओवर हियर. आउट ऑफ 50 you score 20, multiply by 100. When you do, that is one number, divide by another number into 100, and then you get the ratio. Rate. The rate is stated, students, in period of times. जैसे कि आपका इन्वेंट्री कितने टाइम में आपको परचेज करना जरूरी है, दैट इज विद रिलेट टू रेट. नंबर ऑफ डेज और वीक और मंथ. अभी जैसे कि आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, डेटर्स आपको पेमेंट कर रहे हैं, सो दैट वुड बी स्टूडेंट्स इन द नंबर ऑफ डेज, वीक्स या मंथ. 52 डेज में किया, 42 डेज में किया, 30 डेज में किया. सो व्हाट इज दैट? नंबर ऑफ डेज, वीक और मंथ. And then you have rupees. Now, this is a simple expression of ratios where a numerator is divided by the denominator. Okay. And you get the answer. So, these are the different types of ratios that we have. Switch off your cameras. Okay. Next is the nature of ratio analysis. Now, ratios that we are discussing are the only mean, students, of understanding the financial health of business. They are not capable of providing you the precious answers. What all problems did the organization face? वो आपको उसका आंसर नहीं देंगे, बट आपको एक वे आउट बता सकते हैं कि इस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है. ओके, सो द फर्स्ट नेचर इज builds meaningful relationship. That means ratio analysis will help you to understand the meaningful relationship of your various variables in the financial statement. जैसे कि आपके बैलेंस शीट का नंबर्स, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नंबर्स, जिससे आप जजमेंट्स ले सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो वो रिलेशनशिप को. फाइनेंशियल मैटर्स यू कैन एनालाइज प्रॉपर्ली. Also, when you analyze the ratios, it is a key for evaluating the financial performance, position of the company. It is one of the technique which is used in analysis, in interpretation of your financial statements. So in short, you can say that ratio analysis helps you to understand, students, the relationship in the organization. It will help the analyst to make informed decisions about quantitative verdicts, about the financial position, the performance of the firm. Okay? Clear till here? Any doubts till here? Anyone? Okay. Next is the importance of ratio analysis. Now, what's the importance? As we know, that ratio analysis is an essential tool इन दी फाइनेंशियल एनालिसिस, जो आपको ये हेल्प करेगा जानने के लिए कि हम आपकी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, व्हाट आर दी एफिशिएंसी ऑफ द कंपनीज. ओके, सो ये जो एक एनालाइज करेगा रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, जिससे आपको कंपनी का इंसाइट पता चलेगा, कंपनी के ऑपरेशंस पता चलेगा. So the first important is your performance. Performance evaluation.
I am disabling the chats. I think there is no need to open the chats for this class. Henceforth, all the chats will be closed for this chat, for this class. Just give me a minute. I'll take a screenshot also and I'll share who all are chatting continuously without any sense and distracting me as well as the other learners. Let me take a screenshot. I have told last time as well, if you don't want to attend, don't attend the class. आप जाके recording देख लीजिए. I am disabling. Hardly in the last 5 minutes, I will open it. That's your punishment now. I cannot do anything. Every time I need to come and spend my 5 to 10 minutes in scolding you all, which is not good. Okay. So the first is performance evaluation. Now, ratio analysis allows for the comparison of financial ratios over the period of time or against your industry benchmarks. Okay. It helps you students to assess the company's performance, track its progress by identifying the trend, the patterns, the areas of improvement. Okay. So ratios, that is your profitability ratio, your efficiency ratios, your liquidity ratios, which we are going to study in the upcoming sessions. Okay. So all that you can easily come to know with the help of ratio analysis. Financial health assessment. Ratios provide you a snapshot of the company's financial health. It helps you to gauge its ability to meet the short-term, long-term obligations. They assess what is the liquidity, what is the solvency, what is the leverage. So when you analyze such ratios, your debt equity ratio, your interest coverage ratio, your working capital ratio, stakeholders can easily come to know the company's ability to manage the funds, okay, generate cash flow, meet its financial obligations. Investment decision making, ratio analysis is valuable students for the investors. They can evaluate the investment opportunities properly. It provides insight into the company's profitability, your growth potential, your financial stability. So when you compare these ratios, okay, that is between industries, between companies, investors can take the decision about attractiveness, potential risk of that investment. Okay. Then comes financial planning and forecasting. Ratios help in financial planning, in forecasting, by providing you a quantitative basis where you can set up the standards, identify what are the areas of improvement. अगर आपको पता है कि मेरा marks let's say 35% आया है in the exam, so why did I get 35%? What's the reason? Correct? So ये analysis आप करोगे कहाँ पे मैं wrong हो गया, कौन से पेपर के वजह से मेरे marks कम हो गए. So that is what you do in your financial planning and analysis with respect to company. Okay? तो आप यहाँ पे एनालाइज करोगे सेल्स ग्रोथ क्या होता है, किस तरह से कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह से असेट को यूटिलाइज कर सकते हैं. सो कंपनीज कैन आइडेंटिफाई दी स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स, optimize operations, improve the profitability, allocate resources so that they can take a proper decision.
Diagnosis of problem. Ratio analysis helps to identify what are the issues, inefficiencies within a company. If certain ratios, if certain ratios deviate from industry norms or historical trends, it will indicate potential problems that can give you for the future investigation. जैसे कि लेट्स से अगर आपका कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन, तो ये किसका इंडिकेशन है कि देयर इज सम इश्यूज विथ योर प्राइसिंग, with your cost control, with the competition in the market. Then comes communication and decision support. Ratios provide a common language, standardized metrics for the financial analysis, जिससे आपको कम्युनिकेशन कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो कि स्टेक होल्डर्स जैसे जो हमारे हैं, मैनेजमेंट हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, लेंडर्स हो गए, एनालिस्ट हो गए, तो ये एक डिसीजन ले पाएंगे कंपनी के बारे में रिगार्डिंग द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी. तो रेशियो सर्व करता है, यू कैन से एज अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रेजेंटेशंस करना, डिसीजन के लिए हेल्प करना, सो दैट आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सको दूसरों को, जो आपके स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, कंपनी का परफॉर्मेंस. सो ओवरऑल आपको क्या पता चलता है फ्रॉम दिस रेशियो एनालिसिस? दैट इट इज अ पावरफुल टूल. इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, interpret the financial data. Okay, it also assists in evaluating the performance, assessing your financial health, making your proper investment decisions, so that stakeholders can gain valuable insight into the company's operations. They can identify कहाँ पे हमें improvement की जरूरत है. Okay, for the success of the company. Clear, everyone? You can show the thumbs up. Chats will not be open now. Okay, thank you so much. Fine. Thank you so much, everyone. Fine. Next is limitations. Now, what are the limitations of ratios? We'll discuss that one by one. First is your limited comparability. देखो, रेशियो एनालिसिस अगर आप चेक करते हो तो हम एक लिमिटेड चीज को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? इंडस्ट्री बेंचमार्क के साथ, हिस्टोरिकल डेटा के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ. सो विच इज, you can say, challenging. It could not be every time correct what you take a decision on. So differences in the accounting methods, practices among companies can also hinder your accurate comparison. Lack of context. That means ratios provide numerical insights, but they do not provide you complete picture about the qualitative factors, जैसे कि मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज क्या है, इंडस्ट्री के डायनामिक्स क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, चेंजेस क्या है मार्केट कंडीशन के, ये चीजों की जानकारी आपको वो नहीं देगा, right? So therefore, relying on your ratios may lead to incomplete, or you can say inaccurate assessment of company's financial performance. Historical focus. Ratios हम किसका निकाल रहे हैं? जो चीजें already हो चुकी है, correct? So ratios are typically based on your historical financial data. It reflects your past performance. It doesn't give you
द इंफॉर्मेशन अबाउट योर करंट और फ्यूचर डेटा, जो नंबर्स ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, करेक्ट। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपके इकोनॉमिक कंडीशन या एनी शिफ्ट इन द इंडस्ट्री लैंडस्केप will impact the company's performance, which will make your ratios irrelevant. Simplified view, it overlooks students the important intricacies of company's financial statement. Ratios may not consider your strategies या आपने जो यूनिक एस्पेक्ट लिए हैं कंपनी के ऑपरेशंस के लिए, तो ये सब चीजें वो मिस आउट करेगा, जिसकी वजह से आपका जो कंक्लूजन आएगा दैट वुड बी मिसलीडिंग, इनकम्प्लीट। मैनिपुलेशन एंड सब्जेक्टिव, financial ratios are based on the data that is provided in the financial statements. If the financial statements contain errors, inconsistencies, or you can say intentional manipulation, then the ratios would be misleading. Correct? It will be very difficult to get on your accurate conclusion. Lack of standardization. Yes, obviously, some ratios have industry accepted formulas, definition, which is not universally standardized set. So हर एक इंसान अलग अलग रेशियो एनालिसिस के टेक्निक्स यूज करेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी इन दी कंपैरिजन एंड लिमिटेड स्कोप। That means ratios only focus on your monetary aspects, that is financial aspect. वो आपके non financial factors को consider नहीं करते। Customer satisfaction, employee moral, ये सब चीजों से ratios को कोई लेना देना नहीं है. So it will not give you a comprehensive assessment of company's overall performance, or you can say the future prospects. Clear? Okay. Next is okay, thank you so much. So next is classification of ratios. Now the ratios are classified into different categories. Okay, now we'll understand one by one. The first is your balance sheet ratio. The name itself tells you. जो दोनों वेरिएबल्स आप लोगे, दैट इज जब आप रेशियो निकालते हैं आपको जो नंबर्स चाहिए, टू वेरिएबल्स दैट यू विल टेक, they would be both from the balance sheet. That is your balance sheet ratios. Profit and loss account ratios में both the variables would be from your profit and loss account. And interstatement or combined ratio means the name itself tells you combined matlab it will be a combination of both balance sheet and profit and loss. मतलब टू नंबर्स में से एक नंबर आपका बैलेंस शीट का होगा, दूसरा नंबर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, या वाइस वर्सा, एक पीएनएल का होगा, दूसरा बैलेंस शीट का होगा. ओके, अकॉर्डिंग टू द नेचर, ratios are classified into four categories: liquidity ratio, leverage ratio, turnover or activity ratio, and the profitability ratio. Now liquidity. Liquidity is what? जो आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता है ना कंपनी का, वो आपको बताता है. सो ये जो लिक्विडिटी रेशियो है, इट विल हेल्प यू टू एनालाइज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज. क्या आप अपने ऑब्लिगेशंस को पे कर पाओगे आउट ऑफ योर करंट असेट्स, दैट यू विल कम टू. सो लिक्विडिटी रेशियोज आर ऑफ हेल्प when you ascertain the effectiveness of your working capital management. Then we have leverage ratio.
जो आपको ये बताएगा कि आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का। ये रेशियो, लेवरेज रेशियो, इट्स अ मिक्सचर ऑफ योर ओनर्स एंड लेंडर्स। जो वो दोनों फंड्स लगाते हैं बिजनेस में, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, किस तरह से आपने बिजनेस में अपने फंड्स लगाए हैं, कौन से जगह पे आपने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं, दैट इज योर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। कितने टाइम में आपको रिटर्न्स आने वाला है, पैसे आने वाले हैं। एंड लास्ट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी। Profitability, everybody knows, it is an indication of the efficiency of the company. करेक्ट। आपकी कंपनी का इफेक्ट बताएगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। अगर लो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है, दैट मीन्स द कंपनी लैक्स द कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्सपेंस, so you need to take care of that. Okay, so these are the different types of ratios that we had. Now I'm opening the chats. If you all have any doubt, you all can post it. Yes. लिक्विडिटी, ओके। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है, वर्किंग कैपिटल जिसको आप बोलते हो। आपके ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस को जो फुलफिल करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसको आप लिक्विडिटी बोलते हो। अगर आपके पास फंड्स है तो ही आप पैसे पे कर सकते हैं। लेवरेज रेशियो इज नथिंग बट, जहां पे यू कैन से आप कंपनी का दिस जो एक होता है, कंपनी में दो फंड्स होते हैं। एक होते हैं जो डेप्थ होते हैं, जो आपने दूसरों से उधार लिया है। एक होता है जो खुद ओनर्स लेके आते हैं कंपनी में। तो ये दोनों फंड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज योर लेवरेज रेशियो। Balance sheet is that statement which tells you about the assets, the liabilities of the company. Profit and loss account is the statement which tells you what is the profit, what is the loss of that company, the earnings of the company. Yes. Okay. लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है कि आपकी कंपनी किस तरह से डेप्थ को यूज कर रही है, डेप्थ फंड्स को यूज कर रही है टू फाइनेंस द कंपनीज असेट, दैट इज द डेप्थ। For assignments, you can check with the support team. Sachin, if you have any doubts regarding the support, you can talk it with support. I would not be able to assist you anything regarding the support part. Prashant, we are in the fourth unit and you have missed the 3 units, so you can go and watch the recordings. See, ratios, if they are not standard, why should you use? See, every companies. अच्छा, तो आप बताइए कि आपके एग्जाम में आपको परसेंटेज क्यों देते हैं? ताकि आपको कंपैरिजन हो सके कि कौन से किस में कितना मार्क्स आया है, राइट। सेम वे, अगर कंपनी आपको पता नहीं है कि कंपनी में कौन सा डिपार्टमेंट कैसे वर्क कर रहा है, स्टॉक का क्या रेशियो है, करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज के क्या रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या रेशियो है, तो आप कंपनी को आगे कैसे लेके जाओगे? Sahil, I need to resolve the doubts as well. I cannot move ahead without resolving the doubts. Nature of ratio analysis.
देखो, नेचर का मतलब होता है कि क्या क्या चीजें रेशियो एनालिसिस बताता है आपको। रेशियो एनालिसिस आपको मीनिंगफुल रिलेशनशिप बताएगा कि किस तरह से बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के जो ट्रांजैक्शंस है उससे आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। यू कैन कम टू नो व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, यू कैन टेक द डिसीजंस अबाउट द कंपनी, right, by interpreting the financial performance position of the company. There are different parameters, Daniel, like standard costing is there, marginal costing is there. उसी तरह एक ratio analysis है. There are other parameters that we have for comparing. Lack of context का मतलब होता है कि देखो, जो ratios आपको क्या देता है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन बताता है, करेक्ट। आपको जो भी चीजें हैं जो नंबर्स से रिलेटेड है उसी का आप कंपैरिजन कर सकते हो। बट जो मार्केट में डायनामिक्स है या कॉम्पिटिटर्स के एनालिसिस है, जैसे कि एक कॉम्पिटिटर है दूसरा कॉम्पिटिटर है, जो नंबर्स में नहीं है, क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हो? लाइक क्वालिटेटिव चीजें आप कंपेयर नहीं कर सकते, दैट इज लैक ऑफ कंटेक्स्ट। Liquidity is like where you need the funds. You need to pay your obligations. अगर आपके पास obligations है, you need that much funds to pay. Manipulation and subjectivity. मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? एवरीबडी शुड नो दिस। मैनिपुलेशन मतलब चेंजेस करना, करेक्ट। तो अगर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का अच्छा पिक्चर दिखाने के लिए कुछ नंबर्स चेंज किए, तो क्या आपका रेशियो एनालिसिस आपको करेक्ट डिसीजन देगा? क्या नहीं देगा। सो दैट इज अ लिमिटेशन। अगर आपने मैनिपुलेशन किया है तो आपके रिजल्ट्स भी रॉन्ग होंगे। Manipulation and subjectivity, I've already explained everyone, those who have posted. Lack of standardization. Lack of standardization का मतलब होता है, देखो, I will be using different way. So, a simple example I'll give you. My way of teaching is different. The other professors' way of teaching is different, right? So every person has different perspective. So आप यहाँ पे accounting standard सेम हो सकते हैं, but उसे use कैसा करना है, calculate कैसा करना है, everybody will have different point of view. So automatically your results will differ. If you use FIFO method, your result will differ. If you use weighted average method, your result will differ for inventory. So that is what your lack of standardization. आपने एक standardization नहीं बनाया है ratios का. Limited scope, it is as similar to lack of context. जैसे कि यहाँ पे हम qualitative चीजों को consider नहीं करते, that is the reason it is limited. Communication and decision making. The communication and decision support is like, जब आप ratios निकालते हो तो क्या आप अपने पास ही उसका result रखोगे? What will it benefit? Will it benefit you? No. You need to pass on that information to your higher officials, your stakeholders, जिन्होंने आपके कंपनी में फंड्स लगाए हैं, ताकि अगर कंपनी लॉस में जा रही है, टेक एंड टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। अगर आप उनको बताओगे ही नहीं तो कहाँ से उन्हें पता चलेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? दैट इज कम्युनिकेशन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, नेम में ही आंसर है उसका। कंपनी का एनालिसिस देख के ही आप डिसाइड करोगे कि मुझे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगर आपको पता है XYZ कंपनी है जो लास्ट 2 इयर्स से जिसका प्रॉफिट रेशियो इज ओनली 30%, तो क्या आप वो कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। आपके सामने दूसरा ऑप्शन है जिसका प्रॉफिट मेकिंग इज 70%, so you will invest in that company. See, students, I have told you all, break the words and understand the meaning. Okay? Leverage ratio, student, is that which tells you about
what is the debt, what is the capital proportion in the company. लिक्विडिटी रेशियो आपको ये बताएगा कि कंपनी के पास क्या उतना फंड्स है जो वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मीट कर सकते हैं. Okay, thank you so much. डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम मीन्स यहाँ पे आपको रेशियो एनालिसिस से आपको ये पता चला कि मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 30%. तो आप क्या करोगे? डायग्नोसिस का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन इन सिंपल. तो आप इन्वेस्टिगेट करोगे क्यों 30% है, क्या रीजन था, सेल्स में कोई प्रॉब्लम था, प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम था, कस्टमर सर्विस में कोई प्रॉब्लम था. तो ये आपने जब रेशियो निकाला, जब एनालाइज किया, तब आपको ये चीज पता चली. Yes, Sachin Kumar, unmute yourself. Yes, Sachin, what happened? You want to talk to me? Sorry, Sachin Sharma. Okay, so sorry. Yes, Sachin Sharma, what happened? Unmute yourself. हेलो मैडम, सत श्री अकाल मैडम। वाਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। Yes, tell me what happened. यस मैडम, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ आपसे। मैडम ਮੈਨੂੰ बोलिए. ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ मैडम। ਮੈਨੂੰ एकेडमिक सपोर्ट वाले से मैडम ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एकेडमिक सपोर्ट। तो मैंने ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ आपको ਕਹਿੰਦੇ। सचिन थोड़ी देर पहले बताया कि सपोर्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज है, प्लीज टॉक टू सपोर्ट टीम और आइदर मेल टू देम. आई एम योर फॉर टीचिंग, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट सपोर्ट. नहीं नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ सॉरी. मेरी एक बार ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ मैडम। मैं ये कहना चाहता हूँ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने यूनिट भी मैच ਹੁੰਦੀ है। हम्म। हाँ जी मैडम, तो ਤੁਸੀਂ आप सारिਆਂ ਨੂੰ गुड न्यूज देनी थी आपको मैडम, गुड न्यूज। हाँ सॉरी, जी मैम, गुड न्यूज देनी थी आपको, गुड न्यूज मैम। क्या गुड न्यूज देनी थी आपको? ये ਤੁਸੀਂ ये ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ देनी है कि अकाउंट मैनेजर डिसीजन का सब्जेक्ट है ना, वो मैच करके आया। वो ऑनलाइन मोड वाले सब्जेक्ट तो ਤੁਸੀਂ मैच करके आया थी। मैं ऑनलाइन मोड में नोट्स में नहीं निकाल सकिਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ये एकेडमिक सपोर्ट वाले से बात ਹੁੰਦੀ है तो ਤੁਸੀਂ वो ਕਹਿੰਦੀ है कि एक बार यानो गल्ला फैकल्टियों से गल्ला करना है, या वो मेल फैकल्टी हो या फीमेल फैकल्टी हो। हम्म। तो मेरी यही I am गल्ला not ਹੁੰਦੀ है। understanding what you're talking, Sachin. If you need anything about the books that you can check with the team, I'm not able to understand what you're saying. नहीं नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ वो कहती है कि एक बार फैकल्टी से गल्ला करवाना ऑनलाइन ऑफलाइन फैकल्टी बुकों के रिगार्डिंग। ਤੁਸੀਂ क्या वो बात करनी है आपको? क्या बात करनी है? You want to बात। sell anything? गल ये करनी है मैडम कि ऑफलाइन किताबों के रिगार्डिंग बात भी कर सकते हो या See, ऑनलाइन रिगार्डिंग। this is Sachin. I need to stop you right now because this is something where I'm taking lectures. You do not supposed to talk anything here right now. If you have anything, you can talk to support. Thank you so much. ओके। Okay. So I'll show all the slides. I think somebody is requesting. See students, ratios में हमने जो theory part है वो आज cover कर लिया है. Okay. In the next session, we are going to discuss about the ratios which are important, जिसके हमें sum solve करने हैं. Plus पहले हम उसका discussion करेंगे. What are those ratios? उसके formulas, and then we will solve the sum. Okay. So next time in the next session, we are going to solve the sums now. So you can take a pic, those who are saying in the chat box कि हमें फोटो लेनी है, please आप pictures ले लीजिए of the slides if you all want. I'll show you one by one.
Okay. So this is what we discussed today. Theory part we had covered. Next time the ratios जो हम करने वाले हैं, जो important ratios हैं, ठीक है, उसके theory हम cover करेंगे and then we'll start with the sum as well. Okay. So 1 minute. Okay. So thank you students for attending today's session and wish you all a happy Diwali and a happy New Year. Enjoy your Diwali.